Okay, good evening, everyone. Once again, I welcome you all to our second session for today. We have with us CA Rajat Dutta ji. He will be guiding us on various nuances and various issues that we get during inheritance. So, without further delay, to take the introduction of our today's speaker, I would like to invite CA Preeti Singhania ji, who's a core group member. So today we have with us CA Rajat Dutta ji. He's a founder and initiator of INSPL, which is Inheritance Needs Services Private Limited, which is he's a thorough professional with a right blend of academics and work experience. He's a qualified CA and company secretary and a law graduate. He has around 3 decades of operating level experience in diverse sectors of industry and financial services, handling varied functions, and has traversed the journey from a decision seeker to a decision maker, from an implementer to strategizing implementation. Being self-motivated, his quest to learn at every stage blended with the zeal to solve situations and address issues made him craft services to cater to the death and demise agreement. His company is India's pioneer enabler to inheritance. The company provides services to enable seamless transmission of assets to the designated beneficiary. INSPL does all acts and deeds required, which enables assets travel seamlessly through the path of legacy. So he's helping inheritance and related. He's going to help us with that. Now I would like to call CA Chintan ji to present the memento. Thank you. Welcome. So actually, I have a very light session, and I'm going to tell you more, which is not what you know. Because there's such a really audience of chartered accountants, I know you know most of things, but I've dealt with things which you don't know, and I think you don't know. So I moved into this profession as India's first inheritance director, but today I'm not going to speak about the company because that's independent. Here I've come back to give to my community of chartered accountants, fellow chartered accountants, on why there is a big gap and why you as professionals can really play a very, very critical role. And then precisely I've come here. I'm going to tell you only things which I have over the years learned. We are now a 7-year-old company, and we are the first from the oil side in the country. So let's take it from there. And I want it to be as interactive as possible, because if only you speak, then I will just go on. And that's it. Thank you. Who are you? Can you tell me? Human being. Huh? Human being. Human being. Anybody else? Creator. Creator. Anybody else? Individual. Individual. Anybody else? No? Okay. What do you know about this one? Everybody of you know KYC. Is that right? Yes. But do you know yourself? You don't know. Do you know yourself closely? That's why there was a question on you. Yes. So this is the life cycle. You are born in a family. You are born to your parents. You have a brother and sister. And that's how you have a family name. Is that right? Yeah. Please interact, because if you don't interact, I don't get excited. Yeah. So birth creates inheritance. Is that right? Yes. Unfortunately, death is eligible to inheritance. The moment you die, inheritance starts. Yeah. This is nothing new. Story of inheritance and succession is still from Ramayana and Mahabharata. What is new that we are talking of? Nothing new. It all is because of Ramayana and Mahabharata. Ramayana said it has to be given not to the elder son,
but to Bharat, who is the son of the second wife, right? Yes. And Mahabharata said he was 5 villages. So it's actually a legacy and succession. One was with will and one was interstate. So we are discussing something which is new. Yeah? Yeah. Do you have any answer to any of these? Who after me? What after me? How after me? And whom to depend on? If you have any of these answers, then you don't need to look at my presentation further. Do you have any? Yeah? Partly. Partly, okay, you have? Partly. Kindly visualize yourself in this family portrait. Either you or your parents-in-law were baby boomers born in World War II. That is today used to be 70 years plus. Right? What did these people do? If you are not part of this, then you are part of your parents or your parents. What did they do? They saved every rupee for you to give yourself and your brother and sister the best of education. Somewhere down the line, they built a small house because they believed that they need some roof above their head when they retire. In those days, there was no housing finance companies, no loan. So they built a small house. Fortunately or unfortunately, they gave the best of education to their children. And one thing you must really appreciate, all your parents and parents-in-law, to care of their brothers and sisters by getting them educated and married and even settled. Yeah? Yes. Now here comes you. Born 1960 to 1970. You got the best of education. Became good professionals or good, I would say, engineers, doctors, whatever. You started in good work, good place. You made lots of money because you had ESOPs, real estate, commodities market, share market, mutual funds, real everything. You made lots of money. You gave a further good education to your children. But if I go to the last slide, in every vacation, your parents and parents-in-law used to take you to the village or to the. But now today, you go on exotic places for vacation. Not once you want a break. After every 2 months, you say, I want to have a break. And your children also used to it. So now you have enhanced your lifestyle. You have taken loans and everything. By the way, there are only 2 ladies who are here, or maybe 3. So I brought a whole lady gang from my office. They are right there. So can you just stand up? We have Shruti, we have Pooja, and we have Anuja. So all they have to, I thought I should bring today at least all the ladies after yesterday's Women's Day. Thank you. And now look at your children. They are backpackers. They are not worried about your wealth. They stay for today. When they stay for today, they work and they are not interested in your wealth. So if you're either in this category or in the earlier category, you need to take care of this category because this category is not going to work hard. And you have not only earn the wealth for them, but you also need to. No, that's also you. It's not okay. But it's not. I think it's the television. Okay, so I'll give you active children as it goes on. So what typically happens is, in that period, either you don't work for themselves, if you don't work, then they are not going to work for you. So you better take care of your wealth by securing that the inheritor moves on with it. So that is a very, very important factor, right? No one is immortal, life is uncertain, but death is surely certain. So the certainty of death in an uncertain time is a leave nothing to chance. You should not leave anything to chance. Oh, I just got something. Sorry. so all of you are practicing? Yes. Great. So I think at the end of the day today, the 1.5 hours or 1 hour, 15, 20 minutes, whatever you give me, I want you to be knowing everything on inheritance. Please feel free to just bombard me with questions.
And these things you don't read, you don't learn, there is no interpretation, there is no section. आप ऐसे रील खोल के सोचो, दिमाग में एकदम clear हो जाए। Yeah? Any questions up till now? What about who are born after 2000? So people who are born after 2005, I think two things are very clear, that they form in the last category. They are least interested in your wealth. And by the time they are 17 years today, or maybe 10 years, 12 years for you, and you will also not care for them. See, you must also imagine that you have guts to go and tell your parents कि आपके में से क्या देंगे आप, पर आजकल के बच्चों जो नेक्स्ट जनरेशन वो पूछेंगे हमारा क्या। जब पिताजी होते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो के रजत भाई आप जरा आ जाओ पाकिस्तान रात में, क्योंकि अभी ऑपरेशन में 2 दिन काम किया है, अभी बिल सब खत्म कर दो, नहीं तो बिल्कुल तो थोड़ा दूर जाएगा। तो क्या होता है, दिस इज द लेवल, क्योंकि अभी लॉज एंड रेगुलेशंस आर गेटिंग स्ट्रिक्टर बाय द डे। पहले जैसा नहीं रहा जुगाड़, इट इज बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट एंड मोर सो दैट अभी इन इनहेरिटेंस देयर इज नो इंटरप्रिटेशन, इट्स अ चेक बॉक्स, ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, सिंपल। Is it coming here? No. You have to call that back. I've called for him. He's coming. Yeah. Just to answer your question, पहले ऐसा नहीं रहा, we did not have the guts to ask our parents, neither did our parents have the guts to ask their parents. But हमने ऐसा सोचा नहीं था कि किसने will बनाया है नहीं. In fact, let me give you some good statistics. About 25,600 people die in India every day. That's about 93 lakhs. Of the 93 lakhs died, we have only about 0.801% was will. Of that 1.801% was will, it is only 98% which is with ultra HNS. Normal man still does not have. So this is the level. Or just to tell you that will नहीं होने से क्या होता है. I'm just giving will as a name. Don't make it that I am marketing a will. My question, there has to be a testamentary documentation. I've given 3 episodes to tell you how it is. But if you don't have that, then the problem is what typically happens is the law will take its action. So if you are a Hindu, then Hindu succession act will apply. If you are a Muslim, then Muslim personal law. And if you are a party, then you have. So it is very important that you should have a perfect. Then also succession and control. No, Hindu succession. The slide नहीं change हो रहा है क्या? मैंने reshare किया है। इससे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? Okay. This is not working? No. करिए। Yeah, so I said to you, look at this. Age is no bearing at all. You saw all these guys, Puneet, Rajkumar, Shane, Owen, KK, Wow. Satish and Raju, she was all very famous. And can you believe this? Suhani, only 90 years old. Yeah. What are we talking of death? Yeah, आजकल परसों तरसों कभी भी हो सकता है. So address on address. What are you saying? Succession is not natural. To and from spouse, within parent and children, and within children. कुछ natural नहीं है. पहले लोग समझते थे और सोचते थे मेरे बाद मेरी धर्म पत्नी, या मेरे बाद मेरे बच्चे, या मेरे बाद मेरा भाई. कुछ natural नहीं है. Please erase it out. Nothing is natural. In case of Hindus, girls married or otherwise have equal share in their father's property. I repeat 2 words. In Hindus, married or otherwise, girls will have equal share in their father's property. I said father's property, mother's property, father's property, unless the father is made away. तो मेरे आपसे सभी से दरख्वास्त है, आप प्लीज एक मेरे से नुस्खा लेके जाइए आज. आप आपके पेरेंट्स को बोलो बिल बना देने को ताकि आपकी बहन को नहीं मिले, और आपके ससुर को बोलो बिल नहीं बनाने. क्या आपका फायदा है? आज से इतना सीखा कोई फ्री में एडवाइस नहीं देगा. Nominees are not owners but mere custodians. Safekeepers, go down keepers, जो बोलना है आपको बोल दीजिए. Every asset class has a distinct process to be followed. And believe me,
laws are in place, seek documentary evidence, most important, the word documentary evidence. So how does the wealth travel? We are all here to understand how does the wealth travel further. So, by a testimony document. What are the testimony documents? A will and a trust. ये दो ही टाइप का टेस्टमेंट डॉक्यूमेंट और कोई है ही नहीं ग्लोबली, इंडिया में ही नहीं है, ग्लोबली भी नहीं। सेकंड, ये नहीं होगा तो सिर्फ इंडिया में सक्सेशन लॉ अप्लाई होता है। व्हाट इज सक्सेशन? जो आदमी मर जाता है टेस्टमेंट डॉक्यूमेंट के बिना, विदाउट अ टेस्टमेंट डॉक्यूमेंट, देन सक्सेशन लॉ। For Hindu, it is Hindu succession, Hindu, Jain, Buddhist succession. For others, it is Parsis, Christian, Jews, Indian succession. And last is Muslim and non-Muslim. यहाँ पे कोई मुस्लिम पार्टी क्रिश्चियन है क्या? तो 3 स्लाइड बच जाएगा। बोलिए। ध्यान देता हूँ। Sir, one question. हाँ बोलिए सर। Wife is a Hindu and husband is a Muslim or vice versa. हाँ। Then which law will apply? Special Marriage Act, Indian Succession Act, sir. But they should have married under Special Marriage Act. अगर नहीं married क्या? That means she has converted into Hindu and then married. और कभी अगर प्रॉब्लम हो तो third marriage can be illegal also. तो मैरिज होने के बाद में अगर उसको वापस कन्वर्ट करके वापस मैरिज करें तो So there is a section which says that any act of succession will apply for Hindu में Hindu, Jain, Buddhist, Sikh को convert के Muslim को बाद में reconvert करके अगर हुए तो it will be applicable. इंडियन सिटीजन But that is not for Muslim personal. It only applies to priests and priests. Because Muslim personal laws में एक बार शादी हो गया, there is no question of reconversion. Yeah. तो ये एकदम ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और एकदम सिंपल है, याद मत कीजिए कुछ, स्टोरी की तरह बोलूंगा और उस तरह सोच लीजिए। हिंदू मेल, हम सब हिंदू मेल है एक्सेप्ट मरने से विल नहीं है, टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। क्या हो सकता है? उसकी मदर को मिलेगा, उसकी वाइफ को मिलेगा, सन्स एंड डॉटर्स को मिलेगा, सन्स एंड विडो ऑफ प्रीडिसेसर सन को मिलेगा, सन एंड डॉटर प्रीडिसेसर, ये सब उसी के साइड में, पर याद रखें ये फादर को भी, तो ये इक्वली मिलेगा सबको। आई रिपीट, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे और मेरे प्रीवियस वाइफ से भी 1 बच्चा है। ये एक्चुअली केस है, असल में मेरा एक्चुअली है, तो मैं बोल देता हूँ, इट इज ओनली एग्जाम्पल। मेरी एक ही वाइफ है और एक ही बच्चा है, बट फिर भी और डिस्क्लोजर में बोल देता हूँ। इन सच ए केस में विदाउट विल मरता हूँ, तो मेरी मदर जो जिंदा है, मेरी ये वाइफ, मेरी ये वाइफ से 2 बच्चे और मेरी पुरानी वाइफ का 1 बच्चा, सबको इक्वल। सर कॉन्सेप्ट। हाँ, if the man died before he transferred the property to the wife. sir, in very good For that question, month, very because good, he was doing it in the hill. very good question, very good question. A typical chartered accountant question है। Sir, on date of demise, जो एसेट उसके नाम पे है वो ही लागू। बराबर, क्लियरली हाँ बोलिए। So yes, scenario में if suppose that property after the death, the what you call the mother or the widow wants to sell it to someone, and this all these issues are there. No one is and the buyer is not willing to buy it, or maybe at a or the buyer is buy at a very low price than the market. So what are the precautions that the buyer has to adopt? First of all, ये basic principle पे जाते हैं। You can sell only what you want. It is not a Supreme Court decision. बराबर। Supreme Court decision also there. सेकेंड इज, अगर ये सब का एनओसी नहीं है या रेलिंग्विशमेंट डीड नहीं है तो खरीदार रिस्क लेके देगा, इसलिए कम कर देते हैं। क्या काम कर रहे हैं? बिल बनाया लेकिन बिल को रजिस्टर नहीं किया। सर उसका पूरा 2-3 स्लाइड है, एकदम मस्त। ये हिंदू मेल बोला,
अभी सर एक जरा हिंदू मेल का क्लास 1 है और सब समझो कि सब लोग जा रहे थे और कार एक्सीडेंट में सभी तो क्लास 1 एज ही नहीं। मैंने वापस बोला याद रखना ये सबको इक्वली जाना होगा, हाँ, पर क्लास 1 एज ही नहीं है तो क्लास 2 एज आता है। इफ देयर आर नो क्लास 1 एज, वो कौन है? इन ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, फादर है तो फादर को पूरा मिल जाए, अगर फादर नहीं है तो सन्स डॉटर डॉटर ब्रदर एंड सिस्टर को पूरा मिल जाए इक्वल, कैटेगरी वाइज इक्वल जाएगा। दैट्स व्हाई यूज द वर्ड इन सक्सेशन। और हमारे जैसे एक ही ऐसा है कि ऑर्फन है ना, वो क्लास 1 है ना क्लास 2 है, तो सर एग्नेस और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है। और लास्ट में एग्नेस और कॉम्प्लेक्स भी नहीं है तो अमित शाह जी और मोदी जी ले लो, है ना? तो अब हिंदू वे का क्लियर हो गया सर, बिकॉज नाउ नेक्स्ट वन इज अ बिग टॉपिक। सर वाइफ और बच्चों में जैसे होगा, आपने 2 वाइफ बताए तो उनका एक शेयर का 2 बिट सर एक हिंदू में 2 वाइफ हो ही नहीं सकते। नहीं, अगर है तो एक मिनट, लेट मी क्लियर दैट। अगर मेरा लेजिटिमेट एक वाइफ है हिंदू और एक गर्लफ्रेंड है या रखेल है, उससे मेरा बच्चा पैदा हुआ, तो मेरा लेजिटिमेट रिलेशनशिप नहीं है बट चाइल्ड लेजिटिमेट, तो बच्चे को मिलेगा और मेरे गर्लफ्रेंड या रखेल को नहीं। क्लियर? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए, कुछ आगे पीछे करने के पहले। जैसे आपके एग्जांपल में 2 वाइफ वाला क्लास है, तो वो जो वो एक वाइफ उससे बच्चा था वो मर गई है, फिर मैं दूसरा शादी किया। but there are in some cases there are 2 wives which are there. That's it. Two wives are not legitimate, sir. That's why Hindu marriage. Act में legitimate है। आपका बच्चा लेजिटिमेट है, रिलेशनशिप इज अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था? रिलेशनशिप इज इलेजिटिमेट, चाइल्ड इज लेजिटिमेट। तो मदर को आधा जाएगा ना सर, मदर और वाइफ को पहले बचेगा फिर बच्चों को जाएगा, सबको ये सेकंड स्टेज है। हमने इक्वल बताया, सेकंड स्टेज है। पर ये पूरा चेंज होता है अभी। जितने हेयर्स होंगे उतने इक्वल हो जाएंगे, इसलिए है तो छे। अभी पूरा चेंज होता है हिंदू फीमेल का, ध्यान से देखिए। हिंदू फीमेल त्रिधन, जो उसके मदर ने फादर ने शादी के टाइम दिया, मामा ने मामी ने दिया है, जो वो घर से लेके दहेज लेके आए, इन शॉर्ट त्रिधन अच्छा वर्ड है, दहेज में लेके आए, वो अगर मरती है और उसका भी नहीं है, तो फर्स्टली पहला सन डॉटर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीजर सन, शी आर ऑलरेडी मैरिड बिकॉज़ उसका ही बच्चा था, उसका जगह हस्बैंड को नहीं मिलेगा। प्लीज नोट दिस, हस्बैंड को नहीं मिलेगा। और ये सब मर गए हैं तो उसके पिताजी के एयर्स को मिलेगा। उसके पिताजी के एयर्स कौन है? पिताजी का मदर मीन्स उसका ग्रैंड मदर, पिताजी का वाइफ उसका मदर, पिताजी के बच्चे मीन्स उसके भाई। क्लियर? वापस दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, अभी जैसे आपने कहा कि will has to be there, otherwise the interest can be there. हम्म, We have made a will of one particular specific property. हम्म। For rest of it, there is no will. हाँ, ये will का खत्म हो, but I want to answer this question to give you a right example. सर ये ट्राई करते हैं बाजू में 2 मिनट, मैडम को क्लैरिटी देता हूँ। हिंदू औरत शादीशुदा एक्सपायर हो गई विदाउट अ विल, अपने पिताजी के घर से जो पैसा लेके आई है दहेज में है, उसकी शादी में टाइम में जो दिए गहने वहने एक्स वाई पिताजी के साथ, नॉट उसके ससुराल से जो गहने दिए वो नहीं, जिसको हम अच्छे शब्द में स्त्री धन बोलते हैं। वो स्त्री धन किसको जाएगा? अगर वो मरती है तो पहला उसमें हक लड़का लड़की बच्चों का, दैट्स राइट, इंक्लूडिंग उसने पहले शादी किया और उसका बच्चा हो उसमें तो उसका बच्चा है। द हस्बैंड पहले डाइड हो गया, विडोअर है, तो वापिस शादी किया या डिवोर्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बच्चा उसका है तो उसको मिलेगा, पर हस्बैंड को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज जाके घर को बीवी रखा मत मारता। दैट इज सेकंड पॉइंट। अगर इन लोग कोई नहीं है तो किसको जाएगा? उसके फादर के एयर्स को जाएगा। उसका फादर का एयर क्या मीन्स? उसका फादर का एयर मैंने हिंदू मेल में बताया था आपको, ये वाला
फादर का मदर मीन्स उसकी ग्रैंड मदर, फादर की वाइफ मीन्स उसकी मदर, फादर के बच्चे मीन्स उसके वाइफ। क्लियर? हाँ, पर शादीशुदा के बाद उसने नौकरी किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, हस्बैंड वाइफ के साथ स्टॉक मार्केट डीलिंग किया और जॉइंट वेल्थ क्रिएट किया, या हस्बैंड ने बनाया उसका वाइफ को, उसमें पार्टनर थी, या जॉइंट ओनर थी, वो किसको जाएगा? वो जाएगा फर्स्टली टू सन्स एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडली एज ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड टैक्स, वहां पे हस्बैंड एज ऑफ फादर था, यहाँ पे मदर एंड फादर थर्ड की फोर्थ, अगर ये नहीं हो तो सेकंड, नहीं हो तो थर्ड, ऐसा। क्लियर? But how do you distinguish, like, if after marriage everything is being? अभी आइडिया दे दिया ना मैडम, No, but I'm आपके हस्बैंड आइडिया नहीं दिया ना पहले, नहीं. उसको इसमें डालेंगे। तो ये तो है सर, आप और 2-4 सेशन करवा दीजिए, यही तो है। आप मिलो हमसे, हम और भी आइडिया देंगे आपको, सब आपको आइडिया दे दिया ना क्या करने का, आपके फादर इन लॉ मदर इन लॉ के लिए आपके फ्यूचर एक्सपेक्ट करेंगे सर इनकम। ये एक पॉइंट, till now a bill is not mapped to an income tax return. It is very unfair if it gets written, because then there will be big problem in the country. They will never link income tax return with your bill, never will. इतना है। चिदम्बरम कैसा पकड़ा है मालूम है? तो आपको चिदम्बरम एक आदमी मारा, उसका बिल उसने डाला और प्रोबेट, उसमें सब कुछ जा रहा है कार्तिक की बेटी को, और उसका और कार्तिक की बेटी को रिलेशन ही नहीं, उसमें से पकड़ा गया कि ये सब चिदम्बरम का बिना नहीं। आप कार्तिक के बेटे को देंगे क्या? कुछ नहीं देंगे ना, उसने दिया, आप लटक गए, आपको भी प्रोवाइड किया, प्रोवाइड की वजह से पकड़ा था, इसको कार्तिक के बेटे को क्यों देता है? तो पता चला ये चिदम्बरम का फ्रंट एंड है। यस, तो आई नो कुछ सोचेगा, हाँ, whose freedom of activities to think like that? पर अभी तो एआई है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक मशीन ही बोल देता है, तो स्कैनर में जो उनका नाम है उनका आदमी कुछ तो पकड़ लेते हैं। तो अभी हंसी मजाक होगी सर, थोड़ा सीरियस। डॉटर्स हैव इक्वल बर्थ राइट्स, मैंने आपको नुस्खा दे दिया है, प्लीज फॉलो द नुस्खा, वीकेंड में ये काम करवाना चाहिए। इट इज रेट्रोस्पेक्टिव है, क्या मानो मीन्स आपके फादर इन लॉ अगर मर गए हैं पहले और बिल नहीं छोड़ा है, तो आपके साले को पकड़ के अभी भी निकाल सकते, तो वर्ड इज रेट्रोस्पेक्टिव। एक नॉर्मल मिस्टेक्स मैं आपको बताता हूँ। हस्बैंड वाइफ है, घर बॉम्बे में है, चेन्नई में, ये मत पढ़ो सर, अभी तो स्टोरी, ये तो दिखाने के लिए कुछ दिखाना पड़ेगा, मेरे किसी में दिखाया स्टोरी का सुनो। हस्बैंड वाइफ है, 2 लड़का है और 2 लड़की है, हस्बैंड वाइफ का जॉइंट फ्लैट है बॉम्बे में, चेन्नई में, सब जगह पे। हस्बैंड अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हस्बैंड अपने विल में ऐसा लिखा कि भाई मेरा जो जॉइंट प्रॉपर्टी है मेरे वाइफ के साथ, मेरा 50% शेयर है, मेरे मरने के बाद मेरे 2 लड़कों को इक्वली जाना चाहिए। कुछ रियल एस्टेट की सिवाय जो एसेट्स है सब इक्वली मेरे 4 बच्चों के बीच में जाना चाहिए, बराबर है? साइन कर दिया, प्रोवेट हो गया, मर गया, प्रोवेट हुआ, जज ने बोला ये जरा विटनेस कौन है, बुलाओ जरा, तो सब दोनों विटनेस मर गए, फैमिली को बुलाओ, बुलाया, ये राम भाई सोलंकी का नाम है, तो क्या राम क्यों लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है, दिखाओ सिग्नेचर, तो क्या राम लिखा हुआ है, क्योंकि ये बिल डिफेक्टिव है, क्योंकि विटनेस ने सभी जगह विटनेस का साइन राम भाई सोलंकी था, उस टाइम पे उसने राम लिखा था क्योंकि भाभी चाय लेके आई थी, तो साइन करने के लिए राम लिख के चाय का कप दिया, उसमें रह गया, तो खत्म प्रोग्राम, पूरा बिल को निकाल दिया। तो हिंदू सेक्शन में ट्रिगर हो गया, दैट इज रियली डिफरेंट। हिंदू सेक्शन एक्ट ने सबको इक्वली, तो सब घर उसका 50% चला गया, 5 पोर्शन में, वाइफ 1/5 और 4 बच्चे को 1/5 1/5 1/5। उसके वाइफ को अलग ही शेयर क्या हो गया 2 फ्लैट में, 1/2 + 1/5, क्या हो गया सर? 1/7 हो गया, बात खत्म, प्रोग्राम वहां खत्म हो गया।
उसके बाद में बोला मैं ऐसा मिस्टेक करूंगी ही नहीं। फर्स्ट क्लास लॉयर को बुलाया, बोला सेम चीज जो लिखा है वो लिखो, मेरा शेयर जाना चाहिए इक्वली मेरे दो बच्चों के पास रियल एस्टेट का, बाकी सब मेरे को जाना चाहिए इक्वल। लॉयर ने देखा सब वर्ग बोलते ये रामबग होमबग नहीं, नया विटनेस को बोलो, व्यवस्थित लिखा है, साइन करा है, सब कुछ करा है, 3 महीने का वो एक्सपायर हो गया, उसका बिल डाला प्रॉफिट में, जज ने पास कर दिया। एग्जीक्यूटिव है तो तुम्हारा मदन में लिखा है उसका शेयर मीन 1/7 जाएगा सिर्फ तुम दोनों। तो आज तक सर 11 साल हुआ है, कुछ बिका नहीं है, दोनों फ्लैट ऐसी कैसी खड़ी। तो व्हाट आई वांट टू से इज द इम्पोर्टेंस of drafting a bill, please give it to people who really know the business. One small mistake, gone. Now I want to answer this question. मेरे पास एक फ्लैट है, शेयर है, ये है वो है सब कुछ है, मेरे बिल में खाली मैंने ये घर के बारे में ही बोला है, तो सिर्फ घर ही ट्रांसफर होगा, बाकी सब इनको सक्सेशन है, राइट सर? हाँ और अगर ऐसा लिख दिया एवरीथिंग There ऑल एसेट्स हाँ तो फिर नहीं बोलो ना, are 2 more points I'm adding. बोले ना सर। Suppose the day which is when they have returned and delayed and again they have maintained. नो मल्टीप्लिकेशन करो, Being a agent lady or agent person, Good, check one more. हाँ। Is it required doctors or advocate witness? First of all, advocate is not required as a witness. Who should be witness? Witness should be younger to you, who should be known to the testator or the person writing the will, who you think will outlive you. अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे को ऐसा witness चाहिए जो मेरे बाद जिंदा रहे, ऐसा वो कॉन्टेक्ट पे बोलना चाहिए, मेरे को पहचानना चाहिए, मैं रसोई से किसी को भी उठा के एकदम मोची पर नहीं चले। सेकेंड, मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? क्योंकि आजकल है ना, विल को कॉन्टेस्ट करने में मैंने मेरी बेटी को नहीं दिया और बेटी को दिया तो बेटी फट क्रेडिट हो गई कि मेरे बाप तो पागल कर देते, उसको प्रूव करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है। पर पहले जमाने में अगर आप आपके पिताजी को मांगोगे उन लोग डॉक्टर को विटनेस करते थे, आजकल इंडियन मेडिकल काउंसिल की सबसे नो डॉक्टर वांट्स टू साइन अ विटनेस टू इट बिकॉज द लॉ सेज अ विल इज मेड इन स्टेबल माइंड। अपने साला जीपी के पास साइन करा था, जीपी को थोड़ी मालूम है कि स्टेबल माइंड है कि नहीं, न्यूरोफिजिशियन है कि नहीं, ये नॉट न्यूरोफिजिशियन। Actually, you meant to win in English, but the lady don't know English. Yeah, big problem. So the lady, that is the first language. क्योंकि मेरी माँ को इंग्लिश आता ही नहीं है, इसलिए तो मेरे भाई ने लिखा कि इंग्लिश में कर दिया, इसीलिए एक पैराग्राफ ऊपर आता है। This has been read in full by Mr. So and so, mobile number so and so, who is known to me, on whom I have faith. He or she has explained me every paragraph of the bill, though it is in English. I have understood the full detail, and then I am signing it with my full knowledge. But it is type things in English you don't know. Then somebody know who is taking a remand. तो वो आदमी को बुलाएगा। We will Recording also now. No, no, you don't know. How she will know unless we make it in Hindi draft. So that's what I say. I have no understanding. इसमें draft नहीं बना तो पढ़ के आना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, हमने बिल बनाया है और महेंद्र भजन के वर्कर्स, उनको हिंदी में बोलना आता है पर हिंदी पढ़ना ही नहीं, उनके बीओ को तो हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है, बोलना भी टूटा फूटा बोलते हैं। हमने जब उनका बिल बनाया तो उनका जो गांव का सरदार होता है उसका वो साइन करता है कि भाई मैंने इनको हिंदी में पूरा बिल समझाया, इनको तो हिंदी बोलना ही आता है, पढ़ना नहीं आता है, मेरी जवाबदारी है, और वो भी लिख के देती कि मैं इसको विश्वास है और मैं सही। So you require that type of written English. Yes. विटनेस नहीं, विटनेस इज इंडिपेंडेंट। ये एक पैराग्राफ है जिसका नाम और फुल डिटेल आता है, तो अगर वो लेडी मर गई और कॉन्सिडर तो वो आदमी को पकड़ेगा कि तुम्हें क्या समझ रहा है। Otherwise the bill will be नो defective. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत वो जब नाम देता है ना तो सब कुछ मस्ती नहीं करते। नहीं बरोबर अगर ऐसा नहीं लिखा उसमें हाँ तो विल गो टू हिंदू सक्सेशन। one more point. हाँ बोले ना। अभी हम वकील के उधर गए, विटनेस में कोई था नहीं, उससे बोले ये मेरा फ्यूल लगा उसने साइन ले लो। तो अभी तो इसका तो मैं बोल देता हूँ क्योंकि मैं तो इतना ही जानता हूँ, सर वकील हैज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट
वो अगर खुद भी ड्राफ्ट कर रहा है तो ही कैनॉट प्रोवाइड विटनेस, इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूं। उसको अपने को क्यों दे इस विटनेस साइन और तो फिर सर आपको आपका सेक्रेटरी करना वही तो इसलिए एक्चुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम लोगों को, तो आई एम जस्ट है। हम लोग है अभी आपने जो एग्जांपल दे we are in 83 cities, by the way. We operate in 83 cities in India. बोलिए सर। ब्रदर सिस्टर का एग्जांपल दिया आपने, समझो लड़की के नाम पे ये बिल कर दिया और हाउ रीजनेबल और हाउ फाइन इट की बेटी को बिजनेस बना दिया, मतलब Sir, anybody who is deriving any benefit from the will as a beneficiary directly or indirectly cannot be a witness to the will. so if she is not considered in the bill, what I'm trying to say, Then also she is a blood, no? yeah, so She cannot. still she can. If your witness goes by this one, he expires, then it is another नहीं, ऐसा सब लोग इधर थोड़ी सब लोग इधर मैं बोलता हूँ so you should opt for such a person. Yeah. But क्या मेरे फादर को उनके कजिन में इंटरेस्ट है, उनके कजिन पे विश्वास है, अब वो कजिन का हार्ट पेशेंट हो तो मेरे फादर की मैंने लटक गया, मेरे को मालूम है पता नहीं हम तो उसमें करेगा, अभी किसको तो बोल नहीं सकता ना, हम बोलते साला करके तो जाओ कुछ तो मिले। इसलिए क्या आप समझ लीजिए कि anybody witness आपके हित में है कि you choose somebody who is going to outlive you. And second, आपने जैसा बोला, nobody, remember, nobody should be closely related to blood related. जैसे आपकी son-in-law का साइन नहीं होना चाहिए, son-in-law का mother या father नहीं होना चाहिए, means आपके संधि नहीं होना चाहिए, because they are directly or indirectly related to you. They cannot be party to it. Even the person who signed in that he has explained, even that person should not. No, that's not conflict of interest. वन मोर पॉइंट, हाँ सर, बिल के अंदर जो बेनिफिशियरी है, हाँ सर, 5 बेनिफिशियरी है, पर्सन ऑलरेडी एक्सपायर्ड बिफोर दैट पर्सन, हाँ उसका केस है, तो बताओ, परफेक्ट, पूरा तैयारी करके तो मैं ये क्रिश्चियन मुस्लिम नहीं पढ़ रहा, स्ट्रेट, Sir, any responsibilities of the witness at any point? ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। Later, आप कहीं भी विटनेस का साइन करते हो उसमें एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे सामने साइन किया। It is only in case of a will when the witness's responsibility is the person who is signing was in stable mind, he was in right frame of mind, he was not under intoxication or coercion or by fraud or undue influence. they called upon to give any such. No, ऐसा होता नहीं है, but that is the understanding part of it. That's essential. हाउ टू पुट दैट वो तो सब जज बैठेगा वो कर दे, वो दो डंडा मारेगा सब सीधा हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जैक्टली इसको वो काटो में कर देता हूँ, टू साइड पर। तो ये सबसे बड़ी आइटम में सबसे बड़े लक्ष्य है आपसे। I'm using colloquial language, but let me tell you, सबके पोर्टफोलियो में 40% से ज्यादा वैल्यू रियल एस्टेट और किसी को समझता नहीं है, सब बेवकूफ बनते हैं और बनाते हैं और आगे काम करते हैं। याद रखिए सर, immovable assets do not recognize the concept of nomination under Transfer of Property Act 1882 as amended till date. They don't have concept of nomination. बात खत्म, ये सोच लीजिए। Society में nomination. But the movable portion of the real estate is reflected in share certificate, which follows the nomination rule because it is governed by SCARA, stipulated nomination. Only because it is governed under SCARA, it's got a nomination. So, in case of a cooperative housing society, nominee is the custodian of the heirs, similarly like the share certificate. Clear? अभी आप लॉजिक समझिए, सोसाइटी कब बना? आप सामने घर खरीदा, किसने खरीदा? बिल्डर से या किसी से बेच लिया, उससे खरीदा। आप शेयर कर वो करने के लिए सब रजिस्टर ऑफिस में गए थे, क्यों गए थे? नहीं जाना चाहिए था। आप गए थे, स्टैम्प ड्यूटी भरा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये वो दुनिया भर का लफड़ा किया, वो साइन करके दिया, आपको सेल डीड मिली। सेपरेशन खाली सेल डीड रजिस्टर करा दिया होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर। बस ये आंसर तो करिए, आपको सेल डीड मिला, वो सेल डीड क्या दिखाता है? सर्वे नंबर सो एंड सो में 126 फ्लैट्स है, उसमें एक फ्लैट 3 माले पे है, वो आपका है, वो और 1/126 शेयर ऑफ द अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ द सोसाइटी, ये बोलता है वो आपका
रजिस्टर्ड सेल डीड है, कल जब आप उसको बेचना है तो उसके बेस पे आप बेच सकते। व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? नया सोसाइटी बना, सब लोगों ने बोला कि भाई हमको दो ऑप्शन है, मास्टर सेल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करो या कॉन्डोमिनियम करो। तो बोला नहीं नहीं, सोसाइटी रजिस्टर करो। रजिस्टर करो तो सर आप तो सब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कैसे करेगा, अपना काम क्या है? तो एक्ट ने क्लीन बोल दिया है, झाड़ू लगता है, लाइट लगता है कि नहीं, सिक्योरिटी है कि नहीं, गार्डन बगीचा फलाना ढिकाना वो सब करने का, और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स। इसके लिए आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शेयर सर्टिफिकेट लाना है, तो आपको बोला 500 रुपये दे दो, शेयर सर्टिफिकेट दे दो। तो शेयर सर्टिफिकेट के पैसे बिलिंग मेंटेनेंस के करके उससे फंड तैयार किया, उससे सोसाइटी देता है। तो शेयर सर्टिफिकेट इज ओनली पोजेशन एंड नॉट ओनरशिप, प्लीज नोट दिस इन डिटेल। आप शेयर सर्टिफिकेट से कोई चीज बेच नहीं सकते हैं, कोई चीज आप इनेबल नहीं कर सकते, योर सेल डीड होना जरूरी है। क्लियर? आप याद रखिए, कोई भी अगर आपको बोलता होगा सब महाराज ऐसी करके पैसे बना, you remember it is the movable part of the immovable property, period. Governed under SCARA and then governed under Transfer of Property Act. Transfer of Property Act does not recognize the concept of nomination at all. Now look at this. Movable assets need nomination. Shares, bank account, they represent the rights of a legal heir. Your life insurance acts as a beneficiary. Your mutual funds is a custodian. Your demat account represents of as a beneficiary. ये सब movable assets. Yes, sir. Immovable property is the most discussed property. कितने टाइप की immovable property? Agriculture, non-agriculture, residential, commercial, land with independent house, apartment in cooperative, apartment in condominium, collector land, cantonment area, सब टाइप का वैरायटी है। ये देखो, पहले क्या होता था, बायर एक बिल्डर से खरीदता है, फिर बायर एक बेचता है मिस्टर एंड मिस्टर बी को, फिर वहां 90s में बी मर गया, बी मर गया तो बी का शेयर कहाँ गया? प्रोबेट एविल है तो प्रोबेट लाओ, नहीं तो सक्सेशन लाओ, जिसको गया उसको लाओ, फिर नया रजिस्टर करो जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, और नया ट्रांसफर भी। यस सर, एनी क्वेश्चन ऑन दिस सर? तो व्हाई आर यू मेकिंग ऑल दिस? मैं क्यों गला काटते हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, बिकॉज बिल इज द ओनली डॉक्यूमेंट। बिल में ऐसा लिखा बेच के पैसा डिस्ट्रीब्यूट करो। सर बोलता हूँ, बिल इज द ओनली डॉक्यूमेंट which has a bearing on wealth distribution of the testator post device. ये आपने बोला ऊपर आ गया। Second, any mistake in drafting the will, recording ownership can pose a challenge during execution. ये याद रखना। Third, very bereaved family who needs to make efforts in retrieving their wealth, खुद का ही wealth जो बाप रखेगा उनके लिए, वो निकालने के लिए उसको पैसा टाइम खर्चा करना। तो will drafting या trust whatever is most critical. तो कुछ लोग क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं वो जरा देखते हैं। Will also contains loans and debts. आप बोलो खाली एसेट और लायबिलिटी नहीं, वो नहीं चलेगा, है ना? Would the beneficiary be liable to pay outstanding debt? मेरे पिताजी ने बोला अगर रजत को जाना चाहिए तो 2 लाख का लोन छोड़ के गया, तो लोन मेरे को देने का, बोलिए सर मेरे को देने का To the extent of the assets. बैंक का 2 लाख लोन है, बैंक 2 लाख को लेकर देगा, तेरे को देगा, या बेच के 2 लाख को लेगा 8 लाख का देगा, ओनली टू द एक्सटेंट एसेट। रोल ऑफ विटनेस, एक्सट्रीमली क्रिटिकल, विटनेस में नॉट आउटविट टेस्टेड। रोल ऑफ एक्जीक्यूटिव रिस्पांसिबिलिटी एम्बेडेड लेस्ड विथ ऑथोरिटी, लुक एट द वर्ड्स, लेस्ड विथ ऑथोरिटी। If testator does not want to give a part of any asset to a particular family member, then testator must clarify and mention the name of the non-recipient. मेरे को मेरी बड़ी लड़की को कुछ नहीं देने का है, सब कुछ मेरी बीच वाली लड़की को देने का है। क्यों नहीं देने का वो लिखना जरूरी नहीं है, पर नहीं देने का वो लिखना जरूरी है। I repeat, नहीं देने का है तो लिखना जरूरी है कि नहीं देने का है, पर क्यों नहीं देने का वो लिखना जरूरी नहीं है। क्या उसने लिखा उसका नाम और खाली तीन डॉटर है, 2 का ही नाम लिखा और 1 का नाम नहीं। तो कॉन्टेस्ट करेगी वो, तो आपको कॉन्टेस्ट सब भूल गया।
residual clause in a will necessary to capture position on date of device. आपने 2024 में बिल बनाया, अब थोड़ी कल बनने वाला, अब तो बनने वाला और 15 साल के बाद, सब हट्टे कट्टे हो, 15 साल के बाद बनने वाला, तो उस दिन का क्या एसेट होगा, तो आज आपको सोच के वहां लिखना है, आपको तो मालूम नहीं ये घर रहेगा कि नहीं, ये म्यूचुअल फंड रहेगा कि नहीं, ये शेयर मार्केट रहेगा कि नहीं, ये डीमेट अकाउंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट होगा कि नहीं, बट आपको इस तरह से कवर करना है ताकि, इसलिए हम है ना shortcuts to be very expensive. Will in most cases is used as a repository. Hence, information of assets and liabilities need to be correct. Mostly, the word is correct. Huh? Will drafting critical as is the only document which is reference point post invoice. Most वकील कर देंगे कि हमें पिताजी को बोला ऐसा नहीं लिखते, पर लिख दिया, कौन पूछा पिताजी को ऊपर जाके आपने क्यों लिखा? So we cannot have any place interpretation. Cannot have any ambiguity, it has to be direct. Cost of making a will is the least relevance than the cost of not making a will. तो अरे इतना फीस तुम्हारा है, नहीं यार फीस को मारो बोली, तुम 800 में will बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्या होता है वो will एग्जीक्यूट नहीं होगा, 5 करोड़ का माल है और 800 रुपए के लिए एग्जीक्यूट कर रहा है, अब समझ रहे हो, मतलब ही नहीं है, choice of executive is a critical decision. Executors is a critical decision. मेरे हिसाब से दरख्वास्त है जिसको बिल में से मिलने वाला है माल, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनको एग्जीक्यूटर बनाओ, बिल एग्जीक्यूट करने, जल्दी जल्दी आप क्या छोड़ के लाओ खत्म करो, आप समझे? Executor doesn't perform, is he liable for anything? वो तो फिर वापिस Under the law, I must. अंडर द लॉ ऐसा तो नहीं है, पर वो सर ऐसे 4 मर गए, नहीं क्या वैसे कोर्ट एग्जीक्यूट कर, So better to have a neutral person, हाँ neutral person as an executive. तो देखो ऐसा है, कौन न्यूट्रल का आप, मैंने तो Not the आपको family member in short. सर नहीं ये मिस्टेक मत करो, हाँ। बेनिफिशियरी में बनाओ, मैं बोलता हूँ क्यों, हम तो 7-8 साल में देख चुके हैं, सर आँख बंद होता है ना तब सब तलवार निकलती है, जब तक पिताजी माताजी का आँख खुला है कोई तलवार नहीं निकालता, सब बोलते हैं बरोबर है, जैसे आँख बंद हो गया ऐसा स्मशान में आके स्नान करके निकालोगे, मेरा क्या शेर नहीं बन गए, है, शेर और शेर नहीं बन गए। बस इसीलिए क्या है सर, हाँ बोलिए, ये सब जो आरएस लोढ़ा वाला केस था उसमें ऐसा नहीं हुआ, सारे के सारे कच्चे लोग भाग गए, आरएस लोढ़ा वाले केस में, हाँ बिरला वाले केस में हाँ, अल्लाह अलग है। सारे के सारे लोग बिरला। नहीं कर पाए, बिरला जी तो वो थोड़ा केस है ना, थोड़ा अलग टाइप का होता है, वो बोलते हैं नहीं, बता रहे हमारे लिए पूछा रहेगा एमपी बिरला का मिनिस्टर हो गया, वो हो गया, देखो सर, सही बात है। वीडियो बनाया तुम सुन नहीं मैं लोढ़ा सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे ना सर, हाँ, तो अच्छा बनाया था, रजिस्टर भी करवाया था, सब कुछ बरोबर, अभी क्या हुआ था सर, बिरला फैमिली में एक परंपरा है कि वेल्थ फैमिली के बाद नहीं जाती, 35,000 करोड़ में सेटलमेंट हो गया, ये बात पता है, सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट हुआ, अरुण जेटली ने सेटलमेंट कर दिया, तो क्या है, बिकॉज खानदान में पैसा माल नहीं जा सकता और कुछ नहीं, अभी दूसरा केस होने वाला है, चलेगा पटोड़ी खान के नाम, वो भी सबसे चली है, पैसा बाहर नहीं जाता है, तो अंदर ही रहेगा, ऐसा है, ये सब बड़े करती बड़ी बात है, अपने सब अपने ग्रुप में एमपी बिरला का नाम तो चला ही गया, तो सर देखिए, मैं आपको बोला हूँ कि आंख बंद होने के बाद तलवार निकलती थी, कहाँ नाम और शाम को, वो लोड़ा वाला मिनिस्टर मिसयूज द पावर, उसका तो बहुत बड़ा हिस्ट्री है। सर लास्ट पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्या सर, हुआ उसका? सर बाद में लास्ट पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैट जीपीटी मत यूजिए बनाने में, प्लीज डोंट यूज इट, इट विल डिजास्टर. So I have asked this question now, is will and art on the sides? I think it's a craft. And why it's a craft, I want to tell you. Because it is the idea is to provide legitimacy to the will. Yeah, will क्या है, आपका इच्छा पूर्ति है, it's a wish list. उसमें जब डेथ सर्टिफिकेट लगता है तो उसको will. It is not impaired with limitation of time. वो बोगस नहीं बन सकता है टाइम, क्योंकि आप मरेंगे कब मालूम नहीं है, तब तक वो खड़ा रहना.
Second, it includes capability to visualize all future possibilities. आपने बोला मेरे बाद मेरी वाइफ के बाद मेरा लड़का, मेरी वाइफ मेरे पहले मर गई तो मेरा लड़का, और मेरे लड़का अगर मर गया तो उसकी बहू, और मेरा लड़का अनमैरिड मर गया तो पॉसिबल पॉसिबल। तो उसका मेरे को आज प्रोविजन करके properly worded to address any perceived animals needs to be solution oriented, providing options to circumvent. अभी 15 करोड़ के घर है, कौन लोग हैं? भाई बहन साथ में बड़े हुए, माँ बाप चल गए, भाई बहन को आधा, भाई के पास है 7.5 करोड़ देने के लिए बहन को कोई चांस ही नहीं है। सीधा ऑप्शन है, जिस दिन बेचेगा उसको 15 बहन को दे देंगे, और जब तक नहीं बेचेगा तो उस टाइम का जो रेंट है आधा बहन को जाना चाहिए। बहन भी खुद, भाई भी खुद, क्या करेगा सर? कहाँ से लाएगा 7.5 करोड़? कुछ होगा, बैलेंस शीट होता है, पीरियड नहीं होता आपके लेंगे तो मेरे को गलत किया बैलेंस शीट है, पीरियड नहीं है, क्या करेगा? सर एक केस में फादर एक मुझे स्टेट चले गए हैं, सोसाइटी का फ्लैट है, सिस्टर साइन नहीं कर रही है, 3 ब्रदर है, एक सिस्टर है, सिस्टर साइन करके नहीं दे रही है कि मेरा पोर्शन अपने पोर्शन पे वो ट्रांसफर कर दे किसी भाई को, तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है? ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको और एक बोल दूं कि फादर बिल भी बनाने जाएंगे ना तो भी सिस्टर के आना से जरूरी बात करता हूँ। इसलिए बिल बनाना अगर आप जाओ तो आपको सभी भाई बहन का तो साइन चाहिए, कंसेंट एफिडेविट बिना वो देगा नहीं। Father अगर लिखे तो that I will not give to my daughter, देन आल्सो कंसेंट एफिडेविट चाहिए then also. कि ये बिल वैलिड है। फंड डिस्प्यूट हो जाएगा। The consent मैंने evidence. क्या बोला कि भाई बहन के साथ झगड़ा मत करो, खाली फादर को बिल बनाने को बिल कोर्ट पे कंसंट्रेट करो, बहुत सिंपल है। Legally compliant enabling is in implementation. Is registration of will needed? है ना? So by law it is not needed. But will is a supreme declaration or umbrella document as they call it. So what we should do? The testator's personality will should feel that अगर एसेट 40% से ज्यादा है रियल एस्टेट में, स्पेशली अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो, और दूसरे स्टेट्स में भी उसका रियल एस्टेट एसेट है तो इट इज एडवाइजेबल टू गेट इट रजिस्टर्ड। दूसरा मैं आपको एक और नुस्खा देता हूँ आज के लिए, आज के शाम सर क्या है कि याद रखना, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो अपने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को बिजनेस बना दीजिए। तो कोई ऐसा बोल नहीं सकता है कि आप जब आए थे तब आप बंदूक लेके आए थे, आप दारू ले थे, पागल थे, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने साइन किया है कि सामने आपका साइन। दूसरा हमने ऐसा देखा है कि एक क्लाइंट एक्सपायर हो गया, छोटे लड़के ने बिल खोला और देखा कि बाप ने उसको कुछ दिया नहीं, तो उसको 10% दिया तो फाड़ दिया उसने भी, 10% दिया, 90% मेरा भाई ले गया तो मेरे को भी 50% तो मिलेगा, पर हमने सर उसका बिल रजिस्टर करवा दिया था तो उसमें 10% ही So originally is not mandatory. और रजिस्ट्रेशन ऑफिस तो ओरिजिनल नहीं आता है। So you got to certify for. हाँ, तो उसे हो गया मेरा काम, उसने तो ओरिजिनल ही फाटा कि मेरे को 10 आया कैसे। A will can be registered even after death under section 40 and section 41. आदमी मरने के बाद भी उसका will रजिस्टर होता रजिस्टर कौन करेगा जाके? है, बेनिफिशियरी और एग्जीक्यूटर। A will made before the demise of testator but after an existing registered will. Remember, एक registered will है और मरने के पहले दूसरा will बना है तो दूसरा will is valid. It need not be registered. पर उसको प्रूव करना बहुत जरूरी है कि वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस पे नहीं बना। तो उसका क्या रूल है कि इट इज सस्पिशियस ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ द माइंड, अगर सामने वाला बोले कि उसका माइंड स्टेबल नहीं था, appears to be unnatural, wholly unfair, एक ही लड़के को दिया किसको नहीं दिया, it takes prominent part of execution of the will कि इसको बोला एग्जीक्यूट करने को, तब वो will सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में रिजेक्ट हो सकता है। बट इट इज अ मैटर ऑफ लिटिगेशन, 10-12 साल तो श्योर है। Sir, एक बिल बना यहाँ पे 3 daughters में से उसने लिखा कि 2 daughters to their end. अभी as per our discussion, you as you mentioned, it should have been written that
सेकंड डॉटर को नहीं देना है। हाँ, क्या हमारे 3 डॉटर है, सर वर्डिंग इज लाइक दिस, मेरे 3 डॉटर है, उसमें से मैं फर्स्ट डॉटर और थर्ड डॉटर को देने वाला हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सेकंड डॉटर को कुछ नहीं दूंगा। Sir, so my question is that will is registered. हाँ। So now can you make the will non-registered and say that I am mentioning this, clarifying this, Further, but not registering that. Huh? Because he's just reiterating it that. but yeah, not but doing for registration. हाँ, but he has to reiterate this also. Yes, I need to say कि my Second this order. bill is replacing the registered bill. replacing them. No need to register them. No need Because to it's registered. How is the executor separate from the person who is making the will? The person making the will is known as a testator. The executor only executes the will after the death of the testator. So executor and testator cannot do this. If beneficiary died before testator, If beneficiary dies, before the testator, although will is already made, then what is the person who is As already per the expired? okay, very good. So मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला, मैंने फर्स्ट एग्जांपल दे दिया कि लड़का भी मर गया अनमैरिड, तो बेटा हो गया। मेरे मरने के पहले मेरी वाइफ मर गई, मेरा लड़का भी मर गया एंड यू आर नॉट मैरिड, तो मैं अकेला रह गया, तो मेरे को मेरा विल चेंज करना बिकॉज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज हैज डाइड। नहीं चेंज किया तो हाँ, नहीं चेंज किया तो फिर इट विल फॉलो इनटू सक्सेशन एक्ट और सेक्शन 112 of Indian Succession, Hindu Succession Act says it will go to the nearest relative, means मेरे फादर के ब्रदर वगैरह उनको। नहीं, पर उसमें जिसका नाम लिखा वो मर गया ना, 4 थे, एक एक्सपायर हो। हाँ, पर उसका लड़का नहीं मिलेगा। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, उसकी remaining 3 will enjoy the benefit. हाँ, residual, Residual. yes, or surviving beneficiaries. The word is surviving beneficiaries. Surviving There are four beneficiaries. beneficiaries, Yes. one was surviving. Surviving. So it- Sir, a will is made for person expired in favor before of a that. non-relative. will not- A will is made in favor of non-relative. It is. मैं तो हमेशा मेरा नाम सबको देता हूँ। इसको लड़की का मैं थोड़ा सा कि बोलते हैं non-relative. कुछ नहीं। So we have made wills, so 100% has gone to charity, to Indian, 100%. We have made wills in the 100% has gone to गौ रक्षक, और वो भी जैन गौ रक्षक, वो भी जो गाय को मारते नहीं है बूढ़ा होने के बाद, ऐसे लोग हमको उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है। 11 देने का लीज किया, उसमें से उसने 3 चूज। उसपे ट्रस्ट डीड बनता है। नहीं, विल से जाता है। We have gone to people and we people have 50% तो कैंसर होता है। बहुत सर लोग, you can't imagine, वो charity का। और लोग उस टाइम पे क्या है, क्या दिमाग से आते हैं कि इतना खर्चा कमा लिया अभी, तो अभी ऊपर जाने का ऐसा पूरा टिकट मस्का मार जाना है। ट्राफी कर रहा है, हैं? ट्राफी कर रहा है, उसमें उनके रिलेटिव चैलेंज नहीं करते हैं, मतलब somebody agreed, सफरा की भाई मेरे पिताजी का साफ लोगों ने मनाया, बड़े लोगों आप जब बिल बनाते हो तो सोच लो कि एवरी विल बी चैलेंज, तो आप ऐसा बनाते हो कि कोई भी खड़ा चट्टान नहीं तोड़ सकता था। पहले से सोच लो कि ये टूटने वाला है, एकदम ऐसे बैठ के तैयार करो। तैयारी करने जाओगे तो कुछ you should prepare for the worst। आपको 100% करने वाले लोग बहुत सारे हाँ, है ना सर, बहुत लोग हैं। उसमें जो सफरा है, नहीं, अरे सर क्या बात करते हो, उसमें से एक्चुअली क्या है, तो बच्चे लोग प्रेशर बनाते हैं, उन लोगों को पिताजी देते हैं तो हम लोग भी देते हैं, बिकॉज समाज में उनको रखना पड़ता है। आप समझ लो, क्योंकि टाटा इसका नहीं, वो तो बड़े लोग हैं सर, मैं तो नॉर्मल की बात करता हूँ। टाटा कैंसर हॉस्पिटल से उन लोग आते हैं घर पे सर्वाइविंग लेडी को हाथ जोड़ने के लिए कि आपके हस्बैंड ने हमको सब दिया, इसलिए वो देख के पूरा मोहल्ला ऐसा होता है, उन लोग को तो हमारे तरफ से 10 लाख सर, ये फायर हो जाता है। इज्जत का सवाल है, बाप ने 100 करोड़ दिया तो हमारे तरफ से 10 लाख, इट इज कैचेस फायर सर। वो सोशल मीडिया चालू हो जाता है, ये सब सेटिंग होता है। तो ये 4-5 मसाला आपको देता हूँ, शनिवार का दिन है, मजा आएगा। पर्सन सर्विंग अंडर द डिफेंस आर्मी सर्विसेज मेक अ विल एज पर आर्मी ऑर्डर, मींस मरते मरते मैंने अगर बोल दिया मेरे बाजू वाले को कि मेरी बीवी को कुछ नहीं देने का, मेरी एक गर्लफ्रेंड है उसको देने का, दैट इज द मौखिक। इफ अ पर्सन हैज डाइड इन एक्शन, the soldier when he gives a verbal will, it is valid। वो आदमी जो जिंदा था उसको
जाके आर्मी ऑर्डर में साइन करना पड़ता है और बोलना पड़ता है रजत मरते मरते ये बोल के गया और जिसको देव का नाम दिया है बस इट इज वैलिड एंड 100% एनफोर्सेबल बाय लॉ. A child in the womb at the time of the death of the husband, if born, becomes in means my wife was expecting and there was a child and I died. मैंने बिल नहीं बनाया था. अगर मेरे वाइफ ने डिलीवरी किया और कोई बच्चा पैदा हो, अगर स्टिल बॉर्न हो गया तो नहीं, तो अगर बच्चा पैदा हो गया, it is presumed that he was alive on the date of my death. तो मेरा जाएगा उसको, मेरी वाइफ को, वो बच्चे को. क्लियर? विडोज रीमैरिड, मिस्टर एक्स और मिसेस एक्स हस्बैंड वाइफ थे, मिस्टर एक्स एक्सपायर हो गए, मिसेस एक्स ने वापिस दूसरा शादी किया, तो ये विडो जो है उसको अपने हस्बैंड के सबसे पूरा मिलेगा. सेकेंड, अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर, मैंने मर्डर किया ताकि मेरे को मिलने वाला है, ये मरने से मेरे को इन्हें मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा. इसको मार डालो, इसके भी में लिखा है कि मेरे को मिलने वाला है, इसको मार डालो तो नहीं. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि अगर मेरा बच्चा पागल है मीन्स इज यूनाइटेड और इज अंडरगोइंग अ स्पेशल चाइल्ड, जस्ट बिकॉज इज इनकैपेसिटेटेड, उसको स्टिल मिलेगा मेरे बेटा. बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल condition does not make him devoid of intelligence. Yeah. The transition get over. I think In that case, how the transition will happen? very simple. Good question and perfect question for this seminar. It is court appointed guardian. हमने इंडियन गार्डियनशिप एडिशनली प्रीज्यूम टू प्रेजेंस. इसका ये मत बोलो सर, मैं शुरू बोल रहा हूँ, ये तो उसको ऐसे दिखाने के लिए मैं आपको बहुत शुरू बोल रहा हूँ. दो भाई थे, छोटा भाई ने शादी नहीं किया क्योंकि उसको किडनी का प्रॉब्लम था. सर बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा भाई ने शादी नहीं किया, उसको किडनी का प्रॉब्लम था. बड़े भाई ने शादी करता, उसके साथ ही रहता था. छोटे भाई ने सबसे पहले बिल दे दिया, मैं तो सर डायलिसिस वालों का ही मर जाऊंगा. उसने मेरा सब कुछ जाना है मेरे बड़े भाई को. बड़े भाई ने भी बिल बना दिया कि उसका जो भी है वो उसकी वाइफ और बच्चों को इक्वल लिया. दोनों शादी में जा रहे थे, गाड़ी में दोनों उड़ गए. वहां पे उठ गए. तो डिसाइड ऐसा हुआ, कोर्ट का रूल है, जो पहला आदमी ओल्ड है वो पहले मरे, तो उसका भी ट्रिगर हो गया. तो उसकी भी बचे सब कुछ मिल गया. छोटा भाई ने बोला सब कुछ बड़े भाई को देना, पर बड़ा भाई जिंदा नहीं था, तो उसका हिंदू सेक्शन हो गया. वापिस उसको फादर नहीं है, मदर नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो क्लास 2 लेवल में भाभी और उसके भतीजे पूछा क्या सर. सर ये एक ट्रस्ट है, एक इन थिंग है. मेरे पास ट्रस्ट आपका नहीं है ऐसा, है ना, मैंने पिटोला खाया, आपने नहीं खाया, ऐसा है. तो सब लोग चेप के ट्रस्ट लेते हैं, तब चाहिए या नहीं चाहिए पे को, क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत है, इंक्लूडिंग चार्टर अकाउंट. तो मैं आपको एक चेकलिस्ट देता हूँ कि आपके क्लाइंट के साथ आपका अच्छा रिलेशन रखना है, तो आप फंडामेंटल्स कुछ क्लियर करिए. ट्रस्ट कब चाहिए? इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन, बट यू मस्ट नो दिस. फर्स्ट, when an asset owner has an indivisible immovable asset. आपका एक पुश्तैनी घर है जिसमें एक बड़ा ड्राइंग रूम है और एक डाइनिंग रूम है और बाकी सब इंडिविजुअल बेडरूम से अटैच कर रहे हैं. वो आपके 3 बच्चों में जिंदगी से घर कभी स्ट्रक्चरली टूटने से होते हैं. आप बेचो तो 12 पर नहीं, हमको तो हमारा एक खानदानी घर रखने. इट इज इनडिविजिबल, तो वो एसेट आप ट्रस्ट में देंगे. तो आपके मरने के बाद आपके बच्चे एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे होने के बाद उनके बच्चे एंजॉय करेंगे, और जिस दिन सबको बेचने का है आरके स्टूडियो जैसा, तब वे दूसरे का भी लेंगे. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, इफ द asset owner has a child who is of special needs, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ट्रस्ट, क्योंकि आपके बाद उसका ध्यान कौन रखेगा, कैसे रखेगा, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. इसलिए आपके पास ट्रस्ट इज द ओनली ऑप्शन. If the asset owner feels that beneficiary will not be able to handle it,
आपका 5,000 करोड़ है, बच्चे ऐसी जलसा मारते रोज, इनको दे दोगे तो एक ही दिन में 5,000 करोड़ उड़ा देंगे, तो ट्रस्ट बना दो, हर साल 100 करोड़, तो मैक्सिमम 100 करोड़ ही उड़ाएंगे, और वेट करेंगे नेक्स्ट ईयर आएगा दूसरा 100 करोड़ आएगा, इसलिए ट्रस्ट मीन्स स्टैगर्ड बेनिफिट। आपका ऐसा है कि स्टैगर्ड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, तभी ट्रस्ट चाहिए। थर्ड, आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोन ले लिया, मैडम ने BFR और वो सब बोल दिया, तो BFR CFO सबने लोन ले लिया और आपको लगता है अटैचमेंट होगा, तो आपने तब वेल्थ ट्रस्ट में डाल दिया। बट लेट मी टेल यू, IBC इज sincerely considering as a lien on all family trusts, and if it happens, Modi would order it on that thing. Lastly, when an asset owner wishes to continue its ownership, Malhotra building 6 पेढ़ी तक चल रहा है, क्योंकि ट्रस्ट में बना हुआ है। आदमी आए गए, मल्होत्रा वाले भी इंडिया में भी नहीं रहते हैं, फिर भी मल्होत्रा बिल्डिंग ही चलता है। Yes. ये नहीं हो तो आपके क्लाइंट को चेक हो मतलब बेचारा दुखी हो जाएगा थोड़े दिन बाद। स्टेट ड्यूटी के लिए भी करते हैं, तो एस्टेट ड्यूटी जैसा कोई है ही नहीं, तो नहीं है। इनहेरिटेंस टैक्स अगर आएगा ना तो आप समझ लो मोदी छोड़ेगा इसको, सर कोई नहीं छोड़ेगा आपको। मोदी ने दिखा दिया ना रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का डिविडेंड पे ठोक दिया ना डबल का टैक्सेशन, वो नहीं छोड़ेगा सर, वहां भी तो चार्टर अकाउंटेंट बैठेंगे। So that first third that you written, 1C. If assets is to be shared disproportionately among both benefits, then also you should have a trust. किसी को कम देने का, किसी को ज्यादा देने का, हाँ पर देने का, मैंने तो केस ऐसा बोला देने का ही नहीं है, ये तो देने का पर कम देने का, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पैसा वाली है, उसको कम दो, ऐसा होता है ना, एक बच्चे की बीवी बहुत पैसा वाली है, उसको हम लोग करते हुए बन गया, उसको कम दो, तो ट्रस्ट होना। अभी एंसेस्टर प्रॉपर्टी का आपने कहा, हाँ वो तो बहुत ही अच्छी होता है, क्या, एंसेस्टर प्रॉपर्टी हाँ बोलिए आप बोलते हैं। HUF हुआ, हाँ। HUF में आप कैसे करोगे, पार्टीशन होता है तो उसके बाद में HUF से HUF cannot be part of the deal. क्योंकि आप जिस दिन बोल रहे हो आपका शेयर जीरो है, तो आप क्या डील करोगे? आप समझ रहे हो बहुत बेसिक चीज। मैं समझ गया। हाँ। अभी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी, वो HUF में ना, HUF की, अब वो 4 साल में डिवाइड हुआ, उसके बाद में उनके सन के सन डिवाइड होके एम्बिलिकल कॉर्ड टूटा, उनके नाम पे ट्रांसफर हो गया नहीं, सर आप समझो, डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया, नहीं तो पार्टीशन अगर हो गया तो आपका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो गया। सर आई रिपीट अगेन, इवन HUF गुड पॉइंट है सर, पेरेंट HUF से सब पार्टीशन हुआ, HUF से हम पार्टीशन हो गया तो इट बिकम्स अ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, फिर देन यू ट्रीट इट एज सेल्फ ऑक्युपाइड people right. उसमें भी तो HUF प्रॉपर्टी बिकॉज़ ऑफ पेरेंट HUF से डिवाइड अगेन फ्रॉम HUF। So my exchange is on the partition, the son took it in his HUF. HUF If he has taken his share in his HUF, he cannot write in the will because HUF में the day he dies, his share becomes zero. अब एक स्टैंडर्ड बुक लीजिए सर, HUF में कोई जन्म लेता है तो सबका शेयर प्रोपोर्शनली गिर जाता है और कोई मर जाता है तो सबका शेयर प्रोपोर्शनली बढ़ जाता है। यही एक प्रिंसिपल के हिसाब से जो आदमी मरता है उसका शेयर तो वो भी नहीं हो सकता है। तो जो ट्रस्ट जो बना रहेगा एक बार, if so I make a trust for my family, how long that trust will survive, or is there a way that it will conclude somewhere? Of course, there is a discretion trust, there is a non-discretion trust, there is a trust with the tenure, there is a trust with the purpose. आप बोलो, so 10 साल में one time बन जाएगा, 10 साल के बाद ये compulsory trust होके जो भी बेनिफिशियरी होते होगा वो पीपल से इनिशियल बनने के टाइम पे स्पेसिफाई नहीं किया है, पॉसिबल ट्रस्ट डीड इज वेरी ट्रस्ट डीड आपको सब कुछ करना। so if it is selling for infinity then it will not be No, possible. No, it can go for infinity. All around is for infinity. But कभी वो laws of वो नहीं, कभी जैसे आपका फैमिली बढ़ता जाएगा और पब्लिक भी बढ़ता जाएगी और वो कभी सेटलमेंट में आएगा ही नहीं सर। it cannot be closed actually. No, if it is a So it won't be actually advisable to be having it. sir, it is not that. सर थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन है। हाँ, बोलो। अभी एक सोसाइटी का मैटर आया था उसमें आपने बोला नॉमिनी को नहीं किया है, बरोबर। अभी हाईकोर्ट का, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें कि नॉमिनी कैन बी ऑनर ऑफ द प्लेस। सर वो गलत है, सही है। प्लीज डोंट फॉलो।
That is galat and fake. And these, unfortunately, I will tell you that there are lawyers who are stating this to make money out of it. It is a fake message. Don't even follow it because I told you, transfer of property act does not recognize the word nominee. Only share certificate recognizes the word nominee and they can give possession and not ownership. Full stop. सर एक नॉमिनी है उसने ट्रांसफर करवा लिया सोसाइटी से भी शेयर ट्रांसफर करवा लिया और बोल रहा है 12 साल हो गए हैं तो अब तो मेरी राइट हो गई नॉमिनी ने करवा लिया इस तरह और 12 इयर्स पास हो गए कुछ कारण ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में 12 साल का मैं आपको बोलूं सर, जी सर हम लोग सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी की क्या औकात है सब देख तो है क्योंकि कौन सोसाइटी का मैनेजमेंट कमेटी करता है वो आप मैं पानी बोलना नहीं जी मेरा ऐसा क्वेश्चन जो लीगल है वो मैं जरूर करता हूँ फिर जिसको जो करना है वो छोड़ दीजिए सर 12 साल का है कोई सॉल्यूशन कोई है नहीं। सर दूसरा एक पॉइंट है, हाँ अभी व्हील के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला 5 करोड़, पर लास्ट में उन्होंने ये पैराग्राफ लिखा है कि इसको बेच के पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने का, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू सेल आउट द प्रॉपर्टी. What society can restrict and obstruct about the matter? सोसाइटी है नथिंग करेक्ट एक बात समझो सोसाइटी की औकात क्या है मेरा बिल लिखने की सोसाइटी का कोई औकात नहीं है he has no right judicial और quasi judicial to see my bill. पॉइंट नंबर 1 एक चीज समझ लीजिए आप मेरे को कोई भी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल कलकत्ता गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में दिखाइए जहाँ पे सोसाइटी है ऑपरेट टू then decide who the owner should be and who the should not be. They have no right. Correct. They are only here to run administration, boss brigade. Furthermore, the matter is already before the society dispute is going on. Now the society said because it not cannot be sell out, so we can add the name of the other members. Is it possible? सोसाइटी का ऑपरेट नहीं है हम छोड़ देंगे आप सीधा सर प्रोवेट में डालिए प्रोवेट में आएगा उसको कोर्ट ऑर्डर दिखाएगा उसको चेक मार के डालो So just one corollary on that. If I'm giving a nomination in my building, flat, society, so basically my nominee can get their name enrolled in the church certificate. That's what we understand finally on your that. nominee will after your death your nominee will come in the certificate That's as only, nominee A nominee B whatever in relation. that's only thing. And society cannot object to that. No. For in this case, what about redevelopment? Once you have a nominee already in the share certificate, then there's a redevelopment, so the whole society goes, everything goes. No, nothing goes. Redevelopment embeds, Yeah. embeds, the word is embeds. The ownership as the ownership prevailed. Okay. So at that time, if the owner had died and he was nominee, it will continue to say. Government of Maharashtra is thinking to make the government owner. To make a, Nominee order, same figure. maybe. So what about the rent? Who gets the rent, nominee or? The real owners are not. So the- Why use the word nominees are representatives of heirs, public beneficiaries under a testimony law. Simple, वही follow कीजिए. सर अभी ना जो क्वेश्चन उठाया उसमें 2 क्वेश्चन बोले हाँ है ना. बिल्डिंग रीडेवलपमेंट पर्सन ऑलरेडी एक्सपायर बरोबर अभी नॉमिनी है सब लोग लीगल है भी सब है अभी परचेज एक सन के पास है लेकर because other legal heirs are not deciding in Bombay also. If the building goes to redevelopment, that person who is already residing there, what is the right in that fact? Only 1/5 share of the other portion. But who will get this ready plate by the representative? जो रेरा है रेरा एक्ट में वेरी क्लियर है इन रेरा एक्ट इफ यू रीड इट सेल्स जो आदमी वहाँ बैठा है उसको ही मिलेगा पोजीशन पर इन दैट रेशियो इन व्हिच ही लिव्स अगर वो टेनेंट है तो टेनेंट को मिलेगा अंदर ऐसे बॉम्बे में 1000 बिल्डिंग है Budget सब कैसे डिवाइड budget? नहीं ऑन बिहाफ आई दैट्स व्हाई यूज ऑन बिहाफ Only one beneficiary is trading. हाँ बाकी का होगा ना तो उसका बोलेगा क्या यू आर गेटिंग पोजीशन बिकॉज़ टुडे आल्सो इज हैविंग पोजीशन हाँ तो पोजीशन रिमेन से उसको निकाल नहीं सकता है उसको पोजीशन रखेगा और बाकी फोटो बोलेगा कि तुम तुम्हारा नाम ले लो नहीं वो तो फिर वापस फ्लैट मिल रहा है ना फ्लैट तो मिलेगा फ्लैट के बदले फ्लैट हाँ रीडेवलपमेंट तो उसको एक 2 बेडरूम के रेंट पे 6 बेडरूम अगर मिल रहा है उसको तो उसका पोजीशन वाले को ही मिलेगा पर ऑन बिहाफ ऑफ द अदर एरिया तो टाइटल विल रिमेन सेम. I said the right is embedded. The word I use is embedded. We how to execute the new agreement? They are jointly. One person is right, second person is right. Sir, जो भी alive है,
और जो डाइट है उसका जो हेल्थ है उसकी तरफ न्यू एग्रीमेंट चाहिए। अगर नहीं है तो सिविल साइन और Title will be हाँ सेम एम्बेडिंग सेम रेप्लिकेट मिरर इमेज बोलते हैं replicated. यस सोसाइटी ने एक बार फ्लैट ट्रांसफर कर दिया नॉमिनी के नाम पे। सोसाइटी फ्लैट ट्रांसफर नहीं कर सकते खाली शेयर सर्टिफिकेट शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ट्रांसफर। अभी ये 10-15 साल से चल रहा है। हाँ। अब नॉमिनी बोल रहा है मुझे फ्लैट बेचना। हाँ नॉर्मल नहीं कर सकते ये कैनॉट से टैक्स सोसाइटी शुड टेक। उसको भी तो ओनर बोला उनको ओनर ही नहीं है लेटर एडमिनिस्ट्रेशन है ना। लेटर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हाँ लीगल डॉक्यूमेंट का ओनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल सोसाइटी कैनॉट डिसाइड ऑन ओनरशिप से वन जो खरीददार है वो कुछ शेयर सर्टिफिकेट लेके खरीदेगा नहीं जैसे साहब ने बोला था कि वो रिस्क देखेगा तो उसको 20% कम भाव देगा फिर वो एग्रीमेंट लेके आएगा कि मैंने इसे खरीद लिया तो बोले पर ये ओनर नहीं जिसने बेचा तुमको वो सैलरी नहीं ओनर नहीं चलो उसको देगा व्हाट ही सेड इज द राइट थिंग तो घर घर की कहानी स्मृति ईरानी की जबान ये पढ़ लीजिए बहुत सिंपल है हस्बैंड वाइफ है एक लड़का और एक लड़की लड़की की शादी हो गई खुश है सुखी है ससुराल में लड़के की भी शादी हो गई लड़का अपनी बहू के साथ रहता है फादर मदर के साथ और लड़की ससुराल में पिताजी को ऐसा है कि मेरे को थोड़ी बेटी को थोड़ा देना है उसके बाद मुझे सोच लेना बहू को पता चलेगा तो अपना गले हो जाएगा सोचते सोचते वो प्रकट कर रहे तू बेटी को दिया नहीं इसने कुछ बराबर है? बात खत्म हो गई वाइफ सोचती है कि मेरे को भी अपने हस्बैंड का ध्यान रखना चाहिए तो वो थोड़ा कुछ डिसीजन लेके गया नहीं और मैं फंस गई मेरे को भी डिसीजन नहीं लेने का वो भी डिसीजन नहीं लेती है तो 11 साल हो गए भाई बहन झगड़ रहे हैं और वकील कमाते ये स्टोरी है घर घर की कहानी है ये बहुत अच्छा है हस्बैंड ने बोला मेरे बाद मेरी वाइफ और मेरी वाइफ के बाद मेरा लड़का हस्बैंड एक्सपायर हो गया वाइफ के नाम पे सब ट्रांसफर हो गया वील से तो लड़का एक्सपायर हो गया बहू आके बोली माँ मेरा क्या माँ ने बोला मैंने अपनी बेटी को दिया तुम्हारा कुछ है quality drafting of it. Inheritance is a social responsibility. आपने आपकी बेटी को पढ़ाया बेटे को धंधे पे लगाया बेटी की शादी थी उनका इनहेरिटेंस आप नहीं करोगे ये बहुत बड़ा इररिस्पॉन्सिबल हो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन इनहेरिटेंस would you wish to avoid a checkmate situation then strategize to secure your next generations ये पिक्चर देखा आपने Gujarat. Yes. 9th of March 2018, the Supreme Court first came up with the living bill, which is euthanasia, which means when I am in a position of not able to take any medical decisions of what will happen in future, I will trigger my living will, which means I will tell my relatives and friends that in writing well in advance, कि अगर ऐसा पोजीशन आया जिंदगी में तो मेरे को वेंटिलेटर पे मत दीजिए और मेरे को पीसफुली सिंक करने दीजिए दिस इज दैट इस पे केस मैं छोड़ देता हूँ सर ये कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ हमको ये छोड़ के गए हैं एक जवान लड़का था डू नॉट लीव इट टू डेस्टिनी और फिर उसको मालूम है क्या हुआ उसके पिताजी के साथ एक हॉस्पिटल में एडमिटेड है उससे बोला एड्रेस द इश्यूज फॉर इटर्निटी व्हाट आफ्टर मी वो आफ्टर मी और एक आदमी है जो 1 महीने पहले आया उसकी वाइफ एक्सपायर हो गई वो सोचता हूँ करता हूँ करेंगे देखेंगे कहाँ चले गए ये छोड़ के गया ग्रीफ फॉर लूजिंग अ लॉट वन इज अनबेरेबल इनिशिएटिव प्रोसेस सब कुछ फैमिली के अंदर ही है सर क्यों नहीं आप व्हाई डोंट यू टेक अ डिसीजन प्रोक्रेस्टिनेशन इज द चीपेस्ट हॉबी एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव वन any more questions please note down my email id please send whatever questions you have we'll be happy to address it free of cost thank you so much for a patient hearing. ऊपर का बोल रहे थे हाँ नाटको वगैरह वेरी मैडम दिस इज
husband, wife, एक डॉटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, सुन लीजिए, हस्बैंड वाइफ एक डॉटर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हस्बैंड वेरी गुड जीपी प्रैक्टिशनर, 2 जगह क्लिनिक और एक हॉस्पिटल में इक्विटी स्टेक होल्डर। वाइफ आई हमारे पास कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, ये उनका विल है और उनका सब कुछ आ रहा है, मेरे बेटर हमको एग्जीक्यूट करना है। हमने विल देखा तो विल लिखा था उसके पेपर के ऊपर, हमने पढ़ते ना उसके पेपर के ऊपर हिंदी में लिखा था और सिग्नेचर इंग्लिश में था। हमने बोला तो नहीं, माय हस्बैंड वाज अ वेरी बिजी मेडिकल प्रैक्टिशनर, सो ही डिक्टेटेड, आई रोट एंड ही साइंड एंड विटनेसेस जो डॉक्टर है। I said, sure मैम, अगर ये डॉक्टर को मैं कोर्ट में बुलाऊंगा विटनेस देने के लिए तो बाद में वो मुकर तो नहीं जाएंगे ना। तो आप ऐसा क्यों पूछो, मैं भी इससे पूछा, हस्बैंड वाइफ एक बेटी और सब कुछ आपको दिया है, बेटी को कुछ नहीं दिया, मैं मानने को तैयार, और वो भी बेटी छोटी नहीं है, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज अ मेजर, और बेटी ने भी कुछ नहीं बोला। ये मेरे को इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कर, वैसे मेरे को बात करवाई वो विटनेस से। मैंने विटनेस को बोला कि सर आपने तो कहा, मेरे सामने मैडम ने लिखा, सर ने बोला और हमने साइन किया, हमारे सामने साइन हुआ, मैं को ठीक है परफेक्ट है, पर आपको इतना बोल दूं कि आपको कोर्ट बुलाएगा चेक करने के लिए कि बेहतर आप रियली थे, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग डिक्टेशन दे दिया तो आप उनसे घुस जाएंगे, इतना सोच लीजिए। बस उस दिन से आज तक they have not come back. I have come to know that they have cancelled that will and they have followed Hindu Succession Act और माँ बेटी दोनों को इक्वल है। So this is the level. We go to that extent. कि ये बिल में ऐसा क्या है कि कोई बाप अपनी बेटी को नहीं देगा, ये हम मानने को तैयार नहीं है, जबकि बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, she was working in the Big Four. Just one out of curiosity, means nowadays we see many cases wherein the grandfather का जगह है, कुछ नहीं हुआ, तीसरा पीढ़ी का चौथा पीढ़ी आ गया, so where do you think this will get up? What I mean to say is एक case particular बहुत सारे cases हैं. We do a lot of work in this area, in which we actually guide them that just बैठने से या ego या झगड़े में, yeah, there is nobody to break the ice. So we work as professionals to break the ice and try to come to a solution and take it forward. We do it. So Like arbitration. no, we do family settlement. Family settlement is easier. सर एक फ्लैट सेल नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी सिस्टर साइन करके नहीं दे रही है मुझे, काइंड ऑफ थिंग, तो इसमें हम फैमिली सेटलमेंट के थ्रू कुछ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, एक एग्रीमेंट टाइप बना के विदाउट एनी स्टाम्प के मतलब, एंड दैट इज वैलिड आल्सो। yes. So that trust that you said, specific tenure, say for example, any person has two sons and he makes a trust for 25 years. Yes. तभी तो बेटे की शादी हो गई तो और already second the trust. will get the Yeah. again as per Hindu Muslim. No, trust deed हो गया तो उसका second document आ गया, तो हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। Really, sir, like that second clause now I am instantly one. A person has two sons, he is not confident of the first son, only money. हाँ, तो trust शादी तो दोनों की हो जाएगी 25 साल में, बिल्कुल, और फर्स्ट सन को 20% ही लेगा, हाँ, सेकंड पर्सन सन को हाँ, 80%। trust will take care of it. तो उनका जो वाइफ का जो Oh, no problem at all. Trust will take care. 20 में ही आएगा ना? Yeah, बिल्कुल आएगा। It is like in a very crude way, it is like a government article regulation. Exactly, sir. हाँ, इतना strict होता है। Thank you, sir. It is not advisable to buy property in the name of HUF. तो आप प्रैक्टिसिंग हो, आप मेरे को बोलो कि HUF as a structure का कोई इंसेंटिव है क्या? नहीं हमने तो सब गवर्नमेंट को HUF बंद करो, खत्म करो। अभी इंसेंटिव नहीं रहा पहले जैसा, पर पहले सब आपने मार्केट को मिल कर दिया, अभी सर मतलब नहीं। अभी क्यों और इसको टेली पर चार्टर और प्रैक्टिसिंग बोलते रहे आपको 1200-1500 रुपये मिलता पहले का, एक बार रिटर्न फॉल करने का नया, तो सर इट इज नेगेटिव। HUF कोई भी रखता नहीं,
तो फटाफट Wind up. पार्टीशन करके खत्म कर दो। So one question, हाँ बोलो। if a person has deceased और उनका share file मान लीजिए misplace हो गया, so is there a way to retrieve the ये कहाँ का investments है? So we have a company which is only working on this. We have an associate company known as Formidable Image Limited. We find dead people. हम मुर्दों को ढूंढते हैं। That is one business. और हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं का शेयर ढूंढ के लेते हैं जो को मालूम नहीं कहा है। तो उसके लिए क्या है कि हमको बेस डॉक्यूमेंट चाहिए। कोई डिविडेंड वारंट कुछ भी होगा उसमें हम ढूंढ निकालते हैं। We need some anchor The document. family knows that there was a file, जिसमें सारे physical नहीं, copies, covered. the file is misplaced now. But अभी डिविडेंड आता होगा। हाँ तो डिविडेंड आता होगा तो उसका हमको डिविडेंड वारंट चाहिए। कुछ वो तो किस कंपनी में वो नहीं पता, डिविडेंड तो एक दो कंपनी का मान नहीं लीजिए। नहीं ऐसा होता है कि जो भी कंपनी में डिविडेंड अगर शेयर था तो डिविडेंड आता होगा। अगर देव चेंज हाउस अगर चेंज हाउस तो कुछ नहीं 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 एड्रेस अगर एड्रेस दे तो उसको मिलेगा ही कोई चांस नहीं है। तो हम उसमें से there are ways to find it. yeah there is a full process. It is a 9-month process. हाँ सर जैसे फादर का प्रॉपर्टी है और अगर उसका बेटा तो फिल ऑफ करके जो भी है फिर अपना नया प्रॉपर्टी बनाता है अपना नाम पे वो कर लेता है सो दैट द फादर हैव एनी राइट ऑन द प्रॉपर्टी सन बोर्ड ड्यू गिफ्ट हो गया ना सर। फादर के नाम से पैसा फादर जिंदा था तो बेच दिया। जिंदा है फादर भी जिंदा है फादर जिंदा है तो बेच दिया तो और हाँ फादर का प्रॉपर्टी बिक्री करके अपना और उसने लड़का आ गया तो कैपिटल का उसका कलई हो गया तो अभी बेटे ने खरीद लिया कैपिटल भर दिया पूरा उसने क्या लड़के ने खरीद लिया फिर फादर का कोई रोल नहीं है कोई रोल नहीं वो डीन गिफ्ट हो गया। ठीक है हाँ सर बेसिक फीचर इज आउट ऑफ इंडिया वी आर नॉट एबल टू कांटेक्ट हाँ हाँ है ना सर हमें आप चिंता मत करें। But I think only the person can only his property, not the ancestral property what he has got. तो ऐसे पर उसका शेयर होगा ना हाँ, अनडिवाइडेड होगा। okay, that तो we can mention. कल आदमी मर जाएगा तो एक बढ़ जाएगा उसका शेयर। कैसे आई विल आइडेंटिफाई यू कैन आइडेंटिफाई हिज शेयर नो। See, no, basically the father has expired. Hmm. So then he has made a will. Okay, now the dispute is that saying that the other who is not satisfied, saying that property generated is not his, it is of the ancestor. प्रॉपर्टी Okay, this is of the ancestor, which need the. तो अभी इट इज अ डीन को पार्टनर्स। दिन को बस यस हाँ तो पूरा बड़ा बैंड बाजे के साथ आएगा सब लेडीज आ जाएगा। ऐसा प्रॉब्लम है तो लेडीज को थोड़ा चाली कराओ ना तो सब लेवल पे लेडीज को कराओ पुलिस लेवल आ जाएगा क्योंकि लेडीज को झगड़ा नहीं देते तो फटाफट सोल्यूशन निकलता है। हाँ ऐसे केस में सर लेडीज को चाली करा दो दो चार लेडीज को कहेंगे सब लोग धक्का पानी लेके आ जाएंगे क्योंकि सबको पैसा मुफ्त में दी है देखो फटाफट सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि मैन कैन हैंडल लेडीज। एक पॉइंट एक ना पॉइंट हो इधर ग्रैंडफादर एचयूएफ को तारों एक्सपायर हो गए उनके 4 सन थे 4 सन में से ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉपर्टी दैट मींस वो पार्टीशन हो गया। हाँ हो गया अभी एक सन के वो 4 सन है हाँ उसमें से एक सन एक्सपायर हो गया पर पार्टीशन नहीं हुआ कैन द नेक्स्ट सन विल बी द एचयूएफ करता तो आई विल करता जरूर पॉसिबल है मेरे से ज्यादा आपको मालूम है पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ मेरे को पुराना सब नोट निकालने का। एल्डेस्ट सन ऑफ अ फैमिली इज द करता पॉइंट। If the eldest son does not want to become karta, the next subsequent son has the option to become karta. If both those options, one is their sister, then the mother becomes the karta. If the mother doesn't know, then the sister becomes the karta. As a point. ठीक है सर। Thank you, sir. Thank you and have a great week. तब आप तो 4 घंटे का लेक्चर ले रहे थे सर मैं तो तैयार हूँ मैडम बोल दीजिए। मैडम तो कोई आपका इंतजार करने का भैया दो उनको So on behalf of everyone, on behalf of the study circle, I would like to propose a hearty vote of thanks to say Rajat Dutta sir. Thank you for taking us through the various processes, various intricacies of the inheritance process, and thank you so much for taking all the queries of the participants. Thank you so much. And for very interactive. Thank you. मेरे सर ने इतना बढ़िया ज्ञान दिया है तो मिलके चांदी हो जाएगी सर वाइफ को मत छोड़ना। रियली
सर वाइफ को मत छोड़ना, नहीं आपको वहाँ नहीं से We can share. मेरे को भी काट दे। Yes. वहाँ से माल मिलेगा सबको। मान तो सर अपने ज्ञान में दे दिया हमको, हम तो बांट देंगे। आपने जो ज्ञान दिया ना उसको बांटेंगे। एक काम Thank you. So valuable. सर यार